Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the series of VERMA solution and we are solving numerical problems of chapter 4, that is work, energy and power, and this is the first part of this chapter, and in this video we are going to deal question number 1 to 6. So let's begin with the video. Question number 1, calculate the work done by a person in lifting a load of 20 kg from the ground and placing it on 1 meter height table. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक लोड लिया है. क्वेश्चन इज सेइंग दैट कोई पर्सन, कोई इंसान है जिसने 20 kg के लोड को 1 मीटर हाइट टेबल के ऊपर रखना है. ओके, 1 मीटर हाइट टेबल के ऊपर इसे उठा करके ऊपर ऐसे रखना है. 20 kg लोड को 1 मीटर हाइट टेबल पे रखना है. तो उस बीच उसने जो वर्क डन किया तो उसे हमें कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन. ओके, load lifted by the person, let it be m. 20 kg है. height of the table is 1 meter. SI unit में दिया है, so no conversion needed here. So work done is against gravitational force, so W is equal to mass into gravitation. This is the force and into displacement. Okay, work done का formula है हमारे पास force into displacement, और force के जगह पे हम लोग जो है weight of the object लिए, that is mass into acceleration due to gravity. ओके, mg into displacement done, जो h हाइट पे उसे उठा करके ऊपर टेबल पे रखा गया, that is the displacement. So on calculating this, mass of the load is 20 kg, value of g 9.8 and height of the table is 1 meter. On calculating this we get 196 joule. So the work done in lifting the load is 196 joule. Question number 2, at 2 kg body is sliding up an inclined plane of inclination 30 डिग्री. ठीक है, एक inclined plane है जिसका inclination जो है ग्राउंड से 30 डिग्री पे है. तो और यहाँ पे हम लोग 2 kg मास को लेकर के ऊपर जा रहे हैं. So the angle between force and displacement, is 90 minus 30, क्योंकि inclination जो है वो 30 डिग्री का ऑलरेडी है. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 90 minus 30. ओके, सो द थीटा मींस द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी हियर 60 डिग्री. मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन means angle of displacement and force is 60 degree. So the displacement done by the body is 1 meter, because here in question it is given. Question में क्या दिया है? Find the work done by the force of gravity moving the body through 1 meter. 1 मीटर अगर बॉडी को लेकर के ऊपर हम जा रहे हैं तो उसको हम लोग को वर्क डन निकालना है. So work done is equal to force into displacement into cos theta. FD cos theta हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है. And as the displacement is going anti gravity, ठीक है, तो यहाँ पे minus 9.8. force is mass into gravitation, so mass यहाँ पे 2 kg दिया हुआ है और gravitation acceleration due to gravity is 9.8. ठीक है, displacement is 1 and cos 60 degree, क्योंकि angle between force and displacement here is 60 degree. On calculating this we get the value minus 9.8 joule. So the work done in moving the body through 1 meter is minus 9.8 joule. Question number 3, a force of 12 Newton does a work of 12 joule on the body when the body is displaced through 2 meter. Okay, यहाँ पे क्या दिया है? Force भी दिया है, work done is also given here and displacement is also given here. Now we have to find out at what angle to the displacement done the force act. Now here we have to find out the angle, means वो theta जो था, means work done is equal to FD cos theta. So we have to find out the value of theta. Here work done is 12 joule, force is 12 Newton and the displacement is 2 meter.
using this formula, work done is equal to force into displacement into cos theta. तो work done यहाँ पे क्या है 12, force is also 12, displacement done is 2 meter. Now we have to calculate the value of theta. So cos theta will be equal to ये 12 हमारा cancel हो गया, cos theta is equal to 1/2, and we know that the value of cos 60 is 1/2. ठीक है, cos 60 का वैल्यू जो है 1/2 है. सो दिस cos and this cos get cancelled. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो द एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट does the force act is 60 degree. Question number 4 says that find the mass of the body which has 5 joule of kinetic energy while moving at the speed of 2 meter per second. यहाँ पे क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है और काइनेटिक एनर्जी दिया है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ द बॉडी. Let us see the solution. Kinetic energy of the body, here it is given 5 joule. Kinetic energy कितना दिया हुआ है हमारा, 5 joule दिया हुआ है. Speed of the body is 2 meter per second. If m is the mass of the body, then using the formula of kinetic energy, ठीक है, kinetic energy का formula यहाँ पे 1/2 mv square. So m will be equal to 2 into kinetic energy by v square. Again putting these values, 2 into 5, that is the value of kinetic energy, divided by v square. 2 meter per second हमारा v था velocity, और इसको स्क्वायर करेंगे तो it will be 4. We will get 5/2, which is equal to 2.5 kg. Thus the mass of the body is 2.5 kg. Question number 5. Calculate the speed of the body of mass 200 gram having a kinetic energy of 10 joule. ठीक है, स्पीड दिया है, यहाँ वेलोसिटी दिया है. We have to calculate the velocity and mass is given here. यहाँ पे mass है 200 gram. Given that mass of the body m is equal to 200 gram, we will convert it into kg. 200 gram को हम लोग क्या करेंगे, kg में convert करेंगे by dividing it with 1000. 1000 से उसको divide करके और इसे हम लोगों ने kg में convert कर लिया है. Kinetic energy is given here 10 joule as per the formula of kinetic energy. K is equal to 1/2 mv square. We will calculate the value of this v square क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे find out करना है speed. Put these above value. Kinetic energy is equal to 10 joule is equal to 1/2 into mass of the body, that is 0.2 kg. V square हम लोग find out करेंगे 10 into 10. So V will be equal to the speed of the body will be 10 meter per second. Question number 6. A body of mass 25 gram has a momentum of 0.40 kg meter per second. Find its kinetic energy. ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास जो है 25 ग्राम का है. 25 ग्राम की बॉडी है जिसका मोमेंटम जो है 0.4 kg meter per second है. So mass of the body here given is 25 gram. We will convert it into kg. 1000 से डिवाइड करके इसको हम लोग kg में कन्वर्ट करेंगे ग्राम को. Momentum which is denoted by p. P is equal to 0.40 kg meter per second. ठीक है, momentum is equal to, we know the value, formula of momentum is mass into velocity. So p is here given 0.40 which is equal to mass into velocity. mass यहाँ पे हमारा 0.025, velocity we will calculate. इसको divide करेंगे तो हम लोगों को velocity मिल जाएगा 16 meter per second. Now the question says that we have to calculate the value of kinetic energy. ठीक है, हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. 1/2 m मास इज गिवन हियर 0.025. v यहाँ पे हम लोगों को v की वैल्यू मिली, दैट इज 16 into 16. On calculating these we will get 3.2 joule. Thus the kinetic energy of the body is 3.2 joule. If you have any problem, any confusion related to any calculation in this video, please comment in the comment section. Like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for watching.